A touch of tradition, a hint of glow. Today's bride look is all about celebrating timeless beauty with a modern touch. So hey guys, welcome back to my channel Jyoti Bagel Makeup Artist, and here I come with another amazing makeup video where you're gonna love lots of makeup techniques. So here I'm gonna start with the applying lenses on my model, and you guys can see I think I should make a separate video on that, and I make it on the shorts, so आप वहाँ से चेकआउट कर लेना. बट अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो मैंने आई को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, सो हम आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे बेसिकली. एंड मैं लूज पाउडर से उसको सेट कर रही हूँ बिकॉज दैट्स अ क्रीम प्रोडक्ट. आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट आफ्टर द क्रीम प्रोडक्ट यू हैव टू अप्लाई अ पाउडर प्रोडक्ट. वाई? बिकॉज अगर हम पाउडर प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे तो उसमें क्रीज लाइन आ जाएगी, और उसके बाद हम कोई भी कलर डिपॉजिट करेंगे तो उसमें लाइंस क्रिएट होगी. सो बेस हैज़ टू बी लुक लाइक अ बेस, राइट? सो इसके बाद हम लोग ब्राउन शेड लेंगे. एज यूजल आई ऑलवेज मेक अ बेस विद द हेल्प ऑफ ब्राउन शेड. सो यू गाइस कैन सी जो मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम मास, बिकॉज मास के जो ब्रशेज होते हैं दैट इज़ रियली गुड. आई कैन ऑल्सो अटैच द लिंक ऑफ द मास ब्रशेज. These are like drugstore brushes. It's not very expensive, but they work like a expensive brushes. सो आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा ब्राउन शेड से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे मैं कोई भी कलर आई मीन आईज पे करने वाली हूँ. बट I don't know why I really love that brown base, because it just shows that that I did something on the eyes. Otherwise, it feels incomplete whenever I do eyes without brown shade. So मैं कोई भी shade use करूँगी, like कोई भी shade after आई पे मैं कोई भी पिंक करूँगी, ब्लैक करूँगी, ब्राउन करूँगी, but initially I have to apply a brown shade. So that's how I do the eyes. You guys can see कि मैंने corners पे बहुत ही light brown color use किया. It's not like a very dark color. It's just like very soft brown color just to get a very smooth base. And अभी मैंने brush change कर दिया. Now I used Mars brush. No, it's a PAC brush. So this is a flat fluffy brush जिसे मैंने corner पे again corner पे ही हमेशा हम लोग color deposit करते हैं, उसको smudge करते हैं. Never put color in inner corner or the mid of the eyes if it is not required. हमेशा ट्राई करो कि आउटर कॉर्नर पे ही आप लोग आउटर कॉर्नर की जो क्रीज लाइन होती है उसको ही थोड़ा सा डेंस करो. आप डेंस कर करके अंदर आओगे तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा रेदर देन यू पुट द कलर ऑन द टॉप ऑफ द आईज. Okay, so you have to do it like that. And then after I use a flat brush because again now I have to give the proper depth. So that's why I did with the brown, but now I have to put a color जो मुझे eye color करना है basically. So मैंने yellow color लिया है because I have to give a tint of that yellow and green का थोड़ा सा combination. तो mix of the color है because जो outfit है उसमें you guys can see कि थोड़ा सा येलो है और थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर है, तो हम ऐसा पॉप करेंगे. तो इसलिए मैंने पहले येलो का बेस क्रिएट किया है सो दैट हम अगर हम शिमर भी यूज़ करें तो उसमें नीचे टिंट हाईलाइट करें बहुत अच्छे से, एंड देन ऊपर शिमर से अगर हमने ग्रीन शिमर लिया तो ऑब्वियसली वो तो हाईलाइट करेगा. उसके अंदर येलो भी हाईलाइट करेगा. सो दैट्स हाउ आई डिड द थिंग. फ्लैट ब्रश लिया है, इट्स लाइक अ एंगुलर ब्रश, और उससे मैंने बहुत ही प्रिसाइज काजल लगाया है. और जो कलर ऑब्वियसली जो मैंने यूज़ किया दैट इज़ अ ब्लैक एंड शेड. Some people use brown colors also, but I prefer lid पे black color होना चाहिए because it shows your eyes more intense, और वो थोड़ा सा pop up करती है and it's give a very good traditional look if you're doing the bride. And then after I'm smudging it with the help of small smudging brush. Then again on the right side same process हमें करना है. And now our eyes is completed. The left part will done in the end, like once we done with the base makeup, and then थोड़ा सा pop करना है हमें eyes को, because जब आप foundation करते हो उसके बाद ना eyes ज़्यादा नज़र आती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं half done eyes रखती हूँ base से पहले, and then after I put whatever I wanted to put, like lashes. That is very compulsory that you have to put on the bride's eyes, but after that I'll do a lot of things that you'll see in the end of the video when I done with the face stuff. Okay, so अभी क्या करना है, अभी हमें clean करना है. like अंडर आई पे काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट्स होते हैं, या क्यू टिप से आगे आप अच्छे से क्लीन करो. सो आइज़ में कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, जस्ट क्लीन, इट्स जस्ट प्लेन.
and I don't know मैंने कौन सा joke मारा like the model is like laughing. I don't know, maybe there's something, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा because we are kept talking. The model is like very talkative and I'm a kind of person who really like that somebody has to be like chup chap while doing a makeup. Obviously if somebody is talking to me I have to answer, but I'm a kind of personality that I won't talk a lot with my brides as well while doing the work because I feel that it just वो आपका कंसंट्रेशन खराब करते हैं कहीं ना कहीं. सो आई फील कि ब्राइड भी चुप रहो और मैं भी चुप रहती हूँ सो दैट whatever comes it comes in a good way. So I think liner रह गया था. हाँ, I put liner not, it's a kajal with the help of again the liner brush. लाइनर ब्रश की हेल्प से मैंने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा काजल पुट किया है. उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे जस्ट टू गिव अ स्नैच लुक टू द आईज. इट जस्ट लुक, सी यू गाइस कैन सी कि कैसे एकदम से अपलिफ्ट हो गई है आई शेप में बिकॉज वी आर डूइंग अ ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक. देन ऑब्वियसली वी हैव टू डू समथिंग विच लुक्स ट्रेडिशनल बिकॉज आप कभी नोटिस करना जो पुरानी एक्ट्रेस होती थी हमारी and we like Rania bhi we can say they'll put the kajal or a liner like this in a snatched way. बहुत ही बड़ा wing निकालती थी but we are not doing that kind of wing because it's just modernized now. We are doing in a our way. Okay, so now I am applying a moisturizer because clean मैं already कर चुकी थी face. So under eye का stuff clean करने के बाद I put moisturizer, and I guess moisturizer I'm using from Embroilers. I mean I'm the fan of that product. That one product do everything that I don't need to apply any toner, any primer. Embroilers is good to go. And then after I applied Bobbi Brown's eye cream, that is like go to product. I always use that eye cream because it just help me um, कि मेरी ब्राइड्स की या जो भी मैं मेकअप कर रही हूँ उसमें क्रीज लाइंस ना आए. जस्ट गिव अ स्मूथ टेक्सचर. इट जस्ट जो भी ड्राइनेस होती है उसको ओवरकम करती है. सो आई अप्लाइड दैट आई क्रीम सो दैट मैं जो भी प्रोडक्ट लगाऊँ बहुत ईजिली मेल्ट हो जाए. सो दैट्स द प्रोडक्ट. सो आई थिंक दैट्स द स्किन केयर आई डू. लाइक आई फील ये इनफ है. इससे ज़्यादा not required. Like unnecessary why you do a lot of like lot of things. अगर आपका एक ही प्रोडक्ट अच्छा है जिसमें all the qualities है तो फिर why you have to you know put a lot of things like toner, like lot of things. I mean I have seen a lot of makeup artists who are doing these kind of things, but I'm a very um less, I would say less product person. So now we come with the concealer. So I use Too Faced concealer. I mean, if you have seen my all the videos, you can definitely seen that I used Too Faced concealers a lot. I mean, it's like I'm obsessed with that products. I don't know why. I mean, मुझे concealer बहुत पसंद है. Too Faced की concealer is just like मैं खुद पे भी यूज करती हूँ. my brides for my engagement makeup, for every makeup I use that concealer. So here I use a darker shade, like come to the point because we just distracted from the point what we are doing right now. So मैंने concealer यूज किया है एक टोन डार्कर, नॉट अ लॉट ऑफ टोन डार्कर, बस एक टोन डार्कर जो भी मेरे मॉडल का शेड था उससे. और उसके बाद मैंने विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर पहले थोड़ा ब्रश से ब्लेंड करा, फिर ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया. ब्लेंड करने के बाद लाइक प्रॉपरली ब्लेंड करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे पैचीनेस आ रही है या वो प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ योर एंटायर मेकअप. अगर आपका कंसीलर ही अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियसली आपका जो बेस है दैट शुड लुक लाइक अ केकी, और patchiness भी आ सकती है. So you have to be aware with that. So that's why whenever you're putting concealer, put the concealer in a good way and blend it in a good way so that the result will come really good. उसके बाद मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ नेक पे भी, बिकॉज अगेन नेक भी हमारी ड्राई होती है. सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हम नेक पहले कवर करेंगे, बिकॉज नेक इज समथिंग विच गिव अस अ आइडिया कि हमें कैसा शेड रखना है, बिकॉज हाथ से वो ज़्यादा क्लोजर होती है. सो मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज उसके ऊपर ऑब्वियसली आप फाउंडेशन लगाओगे या कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगा रहे हो तो बहुत अच्छे से स्मूथली ड्रैग हो जाता है. अदरवाइज जब कोई प्रोडक्ट ऐसा ग्रीसी प्रोडक्ट नहीं लगा होता ना तो इट्स जस्ट लाइक difficult to drag the product, difficult to blend the product sometimes.
सो या नेक पे भी हमें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत होती है. सो आई गेस मैंने मॉइस्चराइज करने के बाद फाउंडेशन ही लगाया अभी. नाउ आई एम अप्लाइंग अ फाउंडेशन ऑन फेस वेयर आई यूज अ मैक foundation. It's shade I'll mention in the caption so you guys can see, because you know everybody has a different shade, so हमें उसके हिसाब से करना होता है. But yeah, I just mentioned the shade so that you can also have a knowledge of the shade as well. So यहाँ पे मैंने flat brush use किया है. Flat brush से मैंने overall face cover किया है because we have to obviously cover the face so that पूरा जो फेस है वो इवन टोन लगे, कहीं से भी ऐसा ना हो कि कलर डिस्कलरेशन लग रहा है या कुछ भी. बट अगर मैं डायरेक्टली फाउंडेशन लगा देती तो पता है क्या सीन रहता, जो भी हमारा अंडर आई, जो भी हमारा डार्क एरियाज होते हैं ना, वो ग्रेइश हो जाते हैं उस टाइम पे, बिकॉज यू हैवंट बैलेंस्ड इट आउट. और इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू अप्लाई ऑरेंज करेक्टर ऑल द टाइम. You can see I'm doing a bridal makeup, but still I haven't used any orange corrector because the character is not required here. So जो चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है हम अननेसेसरी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पार्ट है मेकअप का. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ भर देंगे मेकअप के अंदर, नहीं. जिसकी जैसी स्किन है, जिसका जैसा फेस स्ट्रक्चर है, फेस टेक्सचर है, जितने प्रोडक्ट की नीड है, हम उसके अकॉर्डिंग ही मेकअप करेंगे. वी डोंट need to put a lot of product, or we don't need to follow all the steps on everyone's, like we are doing makeup on everybody, but we don't need to फोकस ऑन एवरी स्टेप्स. नहीं करने एवरी स्टेप्स, बिल्कुल नहीं करने. अगर रिक्वायरमेंट है तभी करो, अदरवाइज नहीं. और सी हाउ आई एम कवरिंग द नेक. नेक कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो, कोई भी मेकअप कर रहे हो. बिकॉज अगर आप नेक नहीं कवर करोगे, आपने सिर्फ फेस पे मेकअप करा, तो ऑब्वियसली इट विल हाईलाइट्स ना, वो सामने से तो दिखेगा ही दिखेगा, एंड इट विल लुक रियली वियर्ड. बिकॉज जब भी आई हैव सीन अ मेकअप आर्टिस्ट व्हाट वुड आई से, लाइक नॉर्मली भी कोई पार्टी मेकअप या खुद पे ऐसे मेकअप कर लिया, नेक नहीं कवर की है, फेस हाईलाइटेड है, तो बहुत अजीब लगता है. इट लुक रियली वियर्ड. सो आपको बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, इट्स योर ड्यूटी कि आपको हेड टू टो अपनी ब्राइड को देखना है कि कहाँ से क्या कमी लग रही है, तो वो चीज़ करनी है. और नेक तो कवर करना बहुत ही ज़रूरी है. नेवर स्किप नेक. अगर ऐसा लगता है कई बार भूल जाते हो, तो पहले नेक करो, बाद में फेस करो. और नेक क्रीम करने के बाद आप उसको लॉक भी कर सकते हो. पाउडर से मैंने लॉक कर दिया, ऐसे नहीं क्रीम करके छोड़ देना है, नो. बिकॉज इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट. व्हाट आई टीच टू यू गाइस, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमेशा क्रीमी प्रोडक्ट के बाद आपको पाउडर प्रोडक्ट करना है. बिकॉज आई थिंक यू बेटर नो, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया है आपको. सो किस लिए होता है ये आप कमेंट डाउन कर देना मेरे को, so that I also get to know na that you guys are learning or not, because I am making a video. It's not for me all the time, it's for you guys also. I mean, I'm making that video because आप लोग भी obviously याद करो, चीज़ें देखो, सीखो यहाँ से. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मैं अपने लिए ही चीज़ें बना रही हूँ. आई हैव टू ऑलरेडी लर्न द थिंग्स, बट या I make it for you also. So please learn it, please see it, and do the things according to that. Okay, so now here we come to the contouring part. I really like contouring. I mean, मैं भर भर के contouring करती हूँ. So you guys can see how I did it. Like पहले मैंने Krylon का, मैंने यहाँ पे जो contour use किया, that is from Krylon. That Krylon creamy product. And then मैं काबुकी ब्रश से उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. द ब्रश इज फ्रॉम PAC. आप शेप देखो, पता है हर एक ब्रश की शेप बहुत अलग होती है, बिकॉज हमारा फेस शेप बहुत अलग है. हर एक जगह पे अगर हम सेम ब्रश से काम करेंगे, सो ऑब्वियसली सी अगर लिप्स पे काम कर रही हूँ मैं, तो मैंने छोटा ब्रश यूज किया. वाई? बिकॉज आई नो कि अगर मैं बड़ा ब्रश लगाऊंगी तो वो तो फैल जाएगा जो भी प्रोडक्ट है हमारा. तो जो भी छोटी चीज़ है वहाँ पे प्रिसाइजली वर्क करना है, प्रिसाइज ब्रशेज यूज करना है. जहाँ पे भी बड़ी चीज़ है वहाँ पे बड़ा ब्रश यूज करना है. तो दैट्स हाउ वी वर्क बेसिकली, राइट? सो या सो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट लिप्स पे रख गया, तो मैं उसको लग गया है, सॉरी, तो मैं उसको क्लीन कर रही हूँ पहले. और वो क्लीन करने के बाद जो भी मैं प्रोडक्ट लगाऊंगी, ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे से पॉप आउट होगा. अगर बेस के ऊपर लगाऊंगी तो क्रैकीनेस आ जाती है कई बार, बिकॉज बेस इज देयर. लिपस्टिक का कलर भी चेंज हो जाता है बिकॉज लाइट शेड इज देयर. सो काफ़ी सारी चीज़ें, तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड. सो वेन एवर यू आर पुटिंग अ लिपस्टिक, यू हैव टू क्लीन द लिप्स फर्स्ट एंड देन यू हैव टू अप्लाई दैट. नाउ इट्स टाइम टू पुट अ ब्लशर. दैट्स really, you know,
just give me a pleasure when I apply blusher, because at that moment my bride is smiling, right? So yeah, so I am using here I don't know which brand. I think I am using Recode blush, I guess. Yeah. So I just mention each and every detail in the caption box. Otherwise, it's like difficult right now because I am doing a voiceover. That moment, I have like I know that what product I used, but I am just voiceovering it after the month or after 3 4 weeks. So I just forgot it. So now it's time to put the concealer again. It's a highlighter basically. So I use again the same brand, that Too Faced concealer. So now I'm just putting it with the help of finger only, because I feel that when you apply things with the help of finger, then it just reduce heat, and it just help you to blend the product in a very good way. So rather using any beauty blender, I use the beauty blender, but after after applying with the finger. So finger से apply कर रही हूँ मैं directly. You guys can see the areas where we have to apply. You can see in the video. Okay, and then like once I applied it, now you can see that I'm using a beauty blender just to blend it in a proper way, because finger से बहुत अच्छे से blend तो obviously नहीं हो सकता है, but yeah, ब्रश से ज़्यादा अच्छे से आई फील दैट हम लोग जो हाइलाइटर होता है वो फिंगर से लगा सकते हैं, बट अगेन इट्स एवरीबडीज चॉइस. इफ यू वांटेड टू apply it with your brushes, then you'll good to go. Otherwise, you can apply it like this also. I mean, I really like the way that I'm doing. So with the help of beauty blender, you can see that how smoothly it just blended, how good it is looking. And I really like the base in a very in a very um lesser way. I mean, I really don't like the product. There should look the product should look a lot on the face. I mean, I don't know, I'm a different kind of person, and I really like the less is more. I am that kind of person. So yeah, I put the product, but not in an excess manner. It just I put the product in a very sorted way, so that it won't look so much on the face. It just, the person should look like a person. Um, the girl should look like a girl. I never change the person. I am a kind of person. But yeah, again, being a makeup artist, you have to be versatile. If somebody wanted something different, then you have to do it like that. So once you apply like I already told you that once you apply a cream product, then you have to apply a powder. So here I'm applying the powder with the help of pizza puff. So after applying it, I'm also applying it little more, um because we have to do eye again. I have already told you that I'm a kind of person who uh do the eyes in the last. I don't know, I really like doing that because I feel that तभी उसके बाद ज़्यादा अच्छा look आता है. So yeah, so you can see that once I done with the entire face, अच्छे से उसको set करके हम लोग eyes पे आएंगे. तो अभी तो set ही कर रहे हैं, and साथ में hair भी चल रहा है, because we have to shoot also ना, तो हमें time को थोड़ा सा manage करके चलना होता है. So simultaneously we are working, and that's how we also work on the brides, because again, brides also don't have that much time. We also don't have that much time in the season time, so we have to work like that. So you guys can see how smooth and pretty my base is looking, like my model's base is looking, and she's looking really cute. And after layering the product on the under eye, I'm going to start with the eyes. The most loving part in the makeup. So पहले हम लोग काजल लगाएंगे. Like again, I'm using a angular brush for the kajal, and then after I'm completing the eyes, दोनों side में same काजल लगाएंगे हम. काजल लगाने के बाद हम टाइट लाइन भी कवर करेंगे, बिकॉज टाइट लाइन से आईज और पॉप अप होके आती है. सो दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट. यू कैन note it, because not everybody gonna tell you. So I'm the good person who gonna tell you everything, because I really don't believe on hiding anything. So even when I'm giving a makeup classes, I mean, right now I haven't done any makeup classes, but when I do the makeup classes, I always share my entire tips and tricks, whatever I use in my makeup.
because I feel that the practice make a man perfect or a woman perfect. Because टिप्स और ट्रिक्स से कोई भी महान नहीं बन पाया जब तक वो प्रैक्टिस ना करे, और जब तक मैं चीज़ें नहीं बताऊंगी खोल खोल के तब तक मेरे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली, बिकॉज आई नेवर गेट अ चांस टू लर्न द वे आई टीच पीपल. Yeah, because I am a different kind of person, but from where I learned, they have a different techniques, like they have different mindset or whatever. I mean, I am not gonna like going in a deep, but yeah, like everybody is not same, I would like to tell. Yes. So yeah, so I have already done with the like eye kajal and the tight line thing. So I am applying a lashes here. You guys can see that how amazing. Oh shit, I think I just, that's my technique, that I never pulled it, like I never put it. I just apply a lash glue and then I just put it back, और उसके बाद मैं दोबारा लगाता हूँ. I mean, this is my technique. So you can see that now I am applying it once it get dry, so that you'll learn in my classes also. So if you wanted to learn makeup in brief, you can connect with me on WhatsApp or Instagram, because WhatsApp is not there, so you can directly message me on Instagram, because I am planning to come with 15 or 25 days course. But let's see if I wanted to plan it someday. I mean, not exactly, but we'll update on Instagram. So just stay tuned. Just watch my videos and show some love, because it's really appreciate me and it just boosts me to make more videos like that. So yeah. So now you guys can see that lashes बहुत अच्छे से लग चुकी है, and like eyes is looking, it's looking pretty. I mean, I really like these kind of eyes, so that's why I did it. I don't like putting a lot of shimmer in the eyes. I kept it very natural, so that the bride should look like very natural. It's not like that we have done a lot, because we don't. And the second final step, that brows. I mean, brows के बिना तो पूरा look incomplete होता है. Now you guys can see, जैसे ही brows complete करूँगी, how the look turns out. It look really complete. बट अभी लिप्स भी हमें करनी है. सो आई थिंक लिप्स का पार्ट शूट नहीं हो पाया था, सो वीडियो विल बी एंड बिफोर द लिप्स. So you guys can see my other videos and you can learn the techniques from that. So I think this is the entire look. I'm doing a lip liner here, so you can see how I do the lip lining. I mean, I just do a very, I haven't increases the lips of the bride. It just जो भी उनकी लिप्स है उस पर ही सिर्फ मैंने ओवरलाइन कर दिया है, तो बहुत अच्छे से आ जाएगा पॉपअप होके. बट आई थिंक एट द एंड आई विल डू, बिकॉज मुझे लग रहा है शायद ब्राइड को उस टाइम पे, लाइक मॉडल को उस टाइम पे खाना खाना था, इसलिए मैंने लिपस्टिक नहीं पुट की थी, वो मैंने बाद में की थी. सो दैट्स द इंटायर लुक. I mean, without lipstick, you'll see the entire look in the end. And आपने starting में भी थोड़ा बहुत देखा ही होगा. So yeah, that's the amazing look. And यहाँ मैं थोड़ा बहुत shift करते हुए चीज़ें. So she's looking at the phone and she's seeing that how her makeup is looking. She also liking the makeup. She has told me that you have done the amazing job, because the models have a privilege to get the makeup done from a lot of makeup artists, so they know that they can judge very easily that who does the good makeup or who is not. So that's how things will go. And yeah, that's the bindi. I have put it this bindi, but I changed it later, because I'm not liking this much, because ये pictures में भी नहीं आती है, that's why. So I put it, but later I changed it, because मुझे लगा कि red ज़्यादा अच्छा लगेगा. And you guys can also comment that which one is looking. अभी तो मुझे ये अच्छी लग रही है, but उस टाइम पे ये भी अच्छी लग रही है, मतलब उस टाइम पे, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लग रही थी. So मैंने इसको हटा दिया था. And yeah, okay. So now it's time for the model's lunch. So she's eating right now. So उसके बाद हमने फटाफट when she eat it and when she done with the lunch, हम लोगों ने आगे का प्रोसेस किया था. So मैं आपको दिखा दूंगी अभी. So here is our complete look. Hope you guys like the video. If you like the video, then do subscribe my channel and press the bell icon for latest update. And do show your love
in the comment section so that I also, you know, motivated every time and upload a video like this. Thank you so much for watching.